So hi, I'm Anvay. Hi, I'm Arnav. Hello, I'm Sparsh and welcome to Don't Really Know Yet, where we're just three people discussing interesting stuff that's going around the world. And today's conversation starts with a very interesting topic, which is data as a currency. So, So we know that many companies like WhatsApp and Facebook, they all are taking our data. वो And तो the भाई main हाँ reason for taking that data is just to sell it to advertisements so that they can target हाँ us with specific advertisements. भाई क्योंकि So, उन्हें I पैसा just तो felt चाहिए. like introducing that in case any viewer doesn't know what exactly we mean. I Yeah. think we've heard many recent cases as well. The Facebook whistleblower case and Alphabet, the parent company of Google, was also sued in the European courts. I'm not really sure, but yes, and for एक सेकंड नहीं जो manhandling of data विसल ब्लोअर and था वो डेटा की वजह से था जो व्हाट्सएप data डाउन being. था 2 दिन के लिए नहीं कुछ लाइक No, थोड़े टाइम के लिए था. No, WhatsApp was a general glitch. The whole yeah. Facebook down हाँ thing was a general server glitch. I was talking about Alphabet also went to court because of and there are certain theories around the world where we talk about data and how it is being mishandled, हम्म and how I guess it's being supplied to various advertisement companies that further use that data to I'd say manipulate us, but I think हाँ. नहीं पता आई थिंक uh, मैनिपुलेट इज द राइट वर्ड क्योंकि मान ले फॉर एग्जांपल Yeah, they're just trying to हाँ manipulate us into buying their products using targeted advertisements. हाँ और डेटा एज अ करेंसी पता है बहुत ही लाइक एक तरह से एप्ट सेइंग क्यों कह सकते हैं इसे क्योंकि अब यार करेंसी मनी होती है एंड जिस बंदे के पास पैसा है उसके पास पावर है राइट. तो एक तरह से ये मान लो अगर Yeah. तुम्हारे पास डेटा है यू आर वेरी पावरफुल है ना. तो अब भाई यही अब तो बड़ी कंपनीज की व्हाई आर दे पावरफुल क्यों क्योंकि अब मान लो यू आर इन द मार्केट फॉर शूज. ठीक है तुम भाई गूगल सर्च मारोगे फॉर एग्जाम्पल तुमने एडिडास पे देख लिया कौन से जूते हैं नाइकी पे देख लिया कौन से जूते हैं वेबसाइट्स पे उनकी. ठीक है और फिर Yeah. तुमने जाके इंस्टाग्राम खोला एंड देन see मान लो तुम्हें एकदम तब नहीं दिखता. ठीक है बट 2-4 यूजर्स के बाद तुम्हारी भाई जो इंस्टाग्राम की फीड है उस पर जो एड्स आते हैं ओकेजनल एड्स. ठीक है दे स्टार्ट शिफ्टिंग स्लोली फ्रॉम जो भी पहले आता था जो अगर कुछ रैंडम स्टफ आता था उससे धीरे धीरे जूते आने लगेंगे उस पर और उन कंपनीज के ही आएंगे जो ऑब्वियसली which are powerful enough or like wealthy enough to buy data. why Exactly. is Google such a big company, right? From Hmm. power comes from manipulation in this case, because as much as we appreciate their services, as the Google Cloud and all हाँ that, the भाई web services, the browser and their engine, search engine basically. Why is Google a very big company? See, when Google started, I guess the world wasn't educated enough. अरे भाई भाई No, मतलब see, बात तो कह why सकते are हैं हाँ. we why is it, see, this is a very vast topic, data being used हाँ as a manipulative engine. But then if this is so, why wasn't this taken up when Google was started, right? नहीं बट ये भी Google तो है ना कि not गूगल as जब a स्टार्ट ही हुआ not था. not as a Google, not as the company they started from a garage, but हम्म as it started gaining traction, right? When certain it reached a certain amount of users, and right then Yeah. people started noticing how many perfectly tailored ads were going around the हाँ websites and all that. So why wasn't it held up then? Recently, even I think I think the tech committee of the Congress section, I'm not really sure, but I think was also Facebook, Google. They were called to as a witness in that, and they were told to explain their actions in the Congress committee. From what I understand, I think Arnav might have an Yeah. idea. Yeah, हाँ I've heard that Facebook, there was Google, and there was also Amazon, I'm pretty sure. They were all called up just to give their perspectives on data and all. हाँ हाँ लाइक ये पर्सपेक्टिव वाली बात है कि भाई मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ठीक है अगर वो हमारा डेटा ले रहे हैं तो हमारे लिए एक तरह से भाई बेनिफिशियल है एज अ सोसाइटी हम ग्रो कर रहे हैं. ठीक है क्योंकि जैसे टेस्ला की कार्स है फॉर एग्जांपल भाई वो कैसे इतना सही क्या कहते हैं ऑटो ड्राइविंग करती हैं. एक नेटवर्क है
ठीक है, जिससे टेस्ला की सारी कार्स कनेक्टेड है, और जो एक कार का एक्सपीरियंस है उससे हर कार लर्न कर रही है, मशीन लर्निंग बेसिकली। ठीक है, जो एक का Yeah. एक्सपीरियंस है उससे सारी लर्न कर रही है धीरे धीरे। तो यार वहां पे भी तो तुम डेटा ले रहे हो, और उस डेटा से तुम मशीन्स को सिखा रहे हो कि इन सिचुएशंस में ऐसे See, करना है। तो वो see, see, सर्टेन see, एक्सटेंट तो सही है ना, see, बट फिर there is, बात ये है there is, कि there is वेयर both. डज इट एंड? There is, no, no, look, you're right. So there is this thing. There's a pragmatic, positive, optimistic approach, or there is a nihilistic approach, right? Basically, what we're saying is Tesla ने अपना, for example, taking Tesla, right? Tesla ने अपना क्या करा है? They use data handling and data management and machine learning to basically build such a vast and honestly, as a tech person, a beautiful network, right? हाँ, ट्रू। मतलब if I would get the opportunity to study their code, what they've written, it would be like I'd be blessed because such hard work must have gone into making that very beautiful network, right? So basically there's an advantage that Tesla की cars will go better, ठीक है, सही हो जाएगा बहुत कुछ, and auto driving जो होगी, it will get better and better with every drive a person takes, हाँ वही, right? But why? Right? Why? Because your locations are being tracked by the network, right? हमें कैसे It's पता not, लोकेशन ट्रैक हो रही है? see, if, for example, a certain path has to be gone, right? I'm not saying hoti hogi. Okay, I take हाँ back my words, but hoti nahi हाँ hogi, but it is a very huge possibility that हाँ कि हो रही है, that's Tesla, a big its I possibility. mean, network might know where you're going daily, हाँ right? So उससे see, like Tesla, it actually, actively relies on maps. Like, especially हाँ for the auto driving feature, it actively relies on maps. So, like, they're taking your GPS signal actively. So, it's very likely that they're just taking your हाँ कि data like also. they have the means to track us if they want to। Yeah. why बट वो ये, are और हाँ यही चीज अगर एक भाई गलत बंदे का हाथ आ गई तो फिर तो वो तो खैर अलग ही बात है, अगर उसके भाई जो भी उसके इंटेंशंस हुए, खैर किसी बंदे के होते नहीं यूजुअली, बट हो भी सकते हैं, हु नोस। बट वही है कि दे हैव द मींस, ये सही बात है। हाँ, I बहुत will put आसान है forward उनके a लिए काम। question. I will put forward a question. हाँ Yeah. Why is there such a big market for data management these days? See, I think in 2021, one of the highest ranked jobs were data scientists. Why? हाँ Why? वही है ना भाई, डेटा See, इज द data न्यू। security is like a newer topic. Like, हाँ if we go true, 20 years back, nobody cared about data security. They're like, okay, वही let's just join this account, that account. Now that everyone knows about what data is and how it can be used, like, there is awareness about targeted ads now. हाँ, उस टाइम पे भी देख लोगों को पता था, Yeah, बट द पॉपुलेशन ऑफ पीपल हु न्यू वाज वेरी लेस। भाई बहुत बहुत कम लोगों को पता होगा, अगर पता होगा। exactly. अब भाई Now that अवेयरनेस many बढ़ गई people है। know, many people are putting up that we want our data to be secure. So हाँ that's when the whole data management comes in. Like, वो यू companies वांट want डेटा टू बी the data सिक्योर, बट यहीं management so पे, their users feel secure. हाँ बट देख यहीं पे ना मेरे को फिर एक चीज समझ नहीं आती। दो तरह के लोग हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है हु वांट्स कि भाई हर चीज बेटर बनती जाए बनती जाए बनती जाए। ठीक है, कि मतलब Yeah. भाई अब जो हमारे पास है दैट्स ऑब्सोलीट, एक तरह से मान लो किसी का अगर ये माइंडसेट है। ठीक है, तो यार तुम्हें अगर आगे जाना है भाई, एट सम पॉइंट यू नीड डेटा। एक तरह से डेटा क्या है यार, एक तरह से डेटा फीडबैक ही तो हुआ। मतलब हम डेटा को यार, अगर हम सिर्फ एड्स वाले उससे देख रहे हैं ना, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मॉल, क्या कहेंगे उसे, दैट्स अ वेरी स्मॉल Outlook. स्फीयर टू बी लुकिंग एट। क्योंकि हाँ, एक बहुत बड़ा पार्ट यूज हो रहा है डेटा में, सॉरी एड्स में। बट आई थिंक भाई डेटा जितना, जिस अमाउंट में, जितनी वॉल्यूम में डेटा लिया जा रहा है ना, आई थिंक दैट्स अ बिट डेंजरस। क्योंकि हाँ लाइक हमें भाई या तो लॉज बनाने पड़ेंगे आई गेस, या कुछ करना पड़ेगा सो दैट वी रेगुलेट दैट शिट। लाइक If किसी there are कुछ laws present, there are क्या, laws present to handle data loss and हाँ how नहीं data is बट being stolen. लाइक कि कितना, Yeah. किस Is एक्सटेंट that तक but आप ले रहे हो, is लाइक क्या that क्या ले रहे no हो। my question? No, see, I'm going to present another question here. There are laws. Every government has a certain, I'd say, playbook, practical book for how to handle data losses and data stealing, right? And every company has a book on how to securely store data, right? But for example, we understand from a recent news that this much data, I think some billion user data has been leaked and all that, right? हाँ So there is a playbook in that, but
my question is that playbook efficient and correct, or right enough so that data can be recovered firstly? Data doesn't, data where it is going can be tracked and the people behind it can be apprehended. And is that data which is being stolen in a rigorous cycle, or is it just a one time thing? वो भाई See, ये तो playbook है, हाँ but does the playbook address this efficiently? कैसे स्टोर हो रहा है, वी गेट इट, वो प्लेबुक सबके पास है, हमें भी एज स्टूडेंट हमें पता है कि हाँ डेटा कैसे स्टोर करना है, किधर नहीं हाँ डालना, राइट? हाँ बट बट वही है ना कि देख यार, अब देख स्टोर करने वाली बात जो है ना वो तो काफी बाद में आ गई, और जैसे ये ट्रैक करने वाली बात है, ठीक है, वो तो आई थिंक भाई जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ब्लॉकचेन वगैरह, दैट मैं जितना इजी बना रही है उतना डिफिकल्ट भी बना रही है। खैर ये तो लाइक दैट्स होल अनदर टॉपिक है ना। डेटा बट ट्रैक्शन भाई, डेटा सिक्योरिटी जैसे जैसे ट्रैक्शन गेन कर रही हाँ है, बट इतनी जल्दी ट्रैक्शन, सिर्फ अच्छे लोग ट्रैक्शन नहीं गेन कर रहे ना, बुरे लोग भी तो ट्रैक्शन हाँ एग्जैक्टली Exactly. एग्जैक्टली जो बंदा भाई डेटा को एक्सेस करके मिलियंस बना सकता है, ठीक है, वो भी मतलब उतना ही, आई थिंक वो उन लोगों से ज्यादा तेज आगे जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि भाई अब क्या है, मतलब क्योंकि देखो फ्रॉम, क्या, बोल बोल। हाँ कि मतलब यार अब देखो भाई जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो खैर ऐसे पैसा देती है हैकर्स को, ऐसे हैकाथन रखती हैं जिनमें दे आर लाइक ये लो हमारा कोड और इसमें से आप बग्स निकालो या इसे हैक करने का ट्राई करो, ठीक है। बट यार कितना ही कर लोगे तुम, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जिस लेवल के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा बड़े लेवल के लोग जो है उसे हैक करने की ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं फॉर you for purposes that are, well, I'd not say kind. तो Yeah. अब वही है यार कि Let's be honest now, that sort of thing is sometimes, look, there are two groups in the sector. Either they are the whole data activist thing, or they are the basically I will hack this to make money thing, right? हाँ Activists, I get it, activists hack and leak data to for a certain, which is illegal basically, but for a certain, like, to to act as whistleblowers, anonymous whistleblowers, Yeah. because generally whistleblowers are then, I'm not sure, but their lives are made pretty hard from what I understand, right? Because हाँ see, this is a circle. You whistleblow for such a big company, no company in the Silicon Valley will hire you again हाँ true, because you have a record, exactly. right? So वो तो problem है. So anonymous hacktivists group होते हैं. And then there's the other kind, of course, which are not very kind, which will hack you for money basically. See, we don't understand anything about the dark web. The dark web must be $1 billion+ industry just from data handling, data stealing. हो सकती है हाँ, Right? क्योंकि कितना ही पता है यार हमें डार्क वेब के बारे में, लाइक See, we might वही not understand, other people might, but the fact is कि from what I assume, what is my assumption is that it is $1 billion+ industry when we just talk about data. Other चीजें, but just about data, it is more than $1 billion industry. चल बट ठीक यार है. फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि अब अगर ब्लैक मार्केट पे डेटा तुम्हारा सेल हो रहा है तो कौन ले रहा है? क्या ये That वही is the बड़ी point. और पावरफुल कंपनीज है जो यहाँ भी डील कर रही हैं? क्योंकि फिर तो बड़ा भाई मेस्ड सा हो See, जाएगा फिर तो। that is a gray area, no? Dark web is a certain. Why was the dark web built, right? Like every person has a dark side. Even internet, as much as it is advantageous, it is हाँ disadvantageous, वो तो है, right? हाँ Dark web में we Exactly. really don't understand 90% कहाँ काम क्या हो रहा है. And as much नहीं as बट पता है people like डार्क वेब तो यार, डार्क वेब तुम्हारा जितना लाइक हमें यूट्यूब वीडियोस में बताया है ना कि जितना मतलब वो बुरे काम के लिए यूज हो रहा है, बट दैट आई थिंक इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है डार्क वेब का जो तुम्हारा डेटा सिक्योर करने में यूज हो रहा है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल जो तुमने पासवर्ड डाला, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा भाई फेसबुक के पेज का तुम्हारा पासवर्ड है और यूजर नेम है, ठीक है, तो फेसबुक उसे कहाँ सेव कर रहा है कि इस बंदे का ये है और यहाँ है? see, वो तो यार वो data structures है, that नहीं is नहीं stored in बट a नहीं server.
पता है वो चीज कहाँ सेव हो रही है? वो चीज भी तुम्हारी डार्क वेब पे ही सेव हो रही है। फेसबुक भी तुम्हारा वो जो चीज है कि इस बंदे का लॉगिन और ये है, ऑल्दो दे माइट हैव सर्वर्स फिल्ड विद दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्लाउड्स भी हैं, क्लाउड सर्विस लाइक क्लाउड जो See, क्या कहते from हैं सर, जो क्लाउड है ना हाँ जहाँ cloud पे ये storage. सेव्ड है, वो डार्क Yeah. वेब पे ही है। No, see, I am a little mm, not agreeable on that point कि save होता होगा dark web पे. Probably I'm not really sure. But from what I understand about data structure, उसमें ये होता है कि सर्वर जब हम जैसे हम कुछ ऐप बनाते हैं तो उसका जो पीछे लॉगिन बैकएंड लिखा जाता है that is wrote as password and it is encrypted automatically by certain libraries and certain, and वो अलग बात है कि as possible to crack, you can easily crack that type of encryption from what I understand. So वो तो चल, such uses of data hacking वगैरह वो सब तो होगा ही होगा dark web में. But my point was that as much data तेरी वाला आवाज यार section, कट रही है। मैं कह रहा हूँ as much as people like transparency, जो tech section है पूरा उसमें जैसे data is I'd say gray area. हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए बट वी रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग बिहाइंड बैक डोर्स, राइट? हाँ ये तो डेटा है भाई। अंदर वेयर इज दिस Yeah. डेटा गोइंग as हाँ much as, yeah, and with upcoming technologies like blockchain and all, ledgers है, ledgers हाँ are basically anonymous. हाँ वही तो भाई। अब You can एक track साइड your तुम्हारी IP ये है, address. हाँ लाइक एक साइड तुम्हारी ये है जहाँ पे तुम्हें यू नीड डेटा टू, क्या कहते हैं, लाइक यू नीड डेटा, और कंपनीज डेटा ले रही हैं और तुम्हें पता है कि वो ले रही हैं, और लाइक तुम्हारा एक तरह से तुम्हारी पूरी लाइफ उनके पास है, ठीक है। और फिर एट द सेम टाइम देयर आर टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन्स जहाँ पे डेटा है बट ये नहीं पता किसका है, ठीक है। अब आई थिंक अगर भाई इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक तरह से अगर साथ में काम करवाया जाए कि पार्शियल ट्रांसलूसेंसी, नहीं पार्शियल ट्रांसपेरेंसी है कि एक तरह से फॉर एग्जांपल मान लो एक बंदा है तो उसका कुछ डेटा है जो हमें पता है कि इसका है, बट ठीक है जो हम ऐसा डेटा है, यार मैं कैसे बताऊं, ये पता है एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, बट I get it. डेटा भी बहुत तरह का होता है ना यार। देयर आर टाइप्स कि मतलब हाँ जैसे मैं वापस अपने टेस्ला वाले एग्जांपल पे आता हूँ कि अगर एक टेस्ला का एक्सपीरियंस कुछ रहा है एक रोड पे कि मतलब मान लो लेफ्ट टर्न लेना है फॉर एग्जांपल, प्राइमरी Yeah. एग्जांपल कि अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो ऐसे लिया जाएगा या फिर अगर ऐसी रोड है तो ऐसे चलाया जाएगा, ठीक है। यू डोंट नीड द स्पेसिफिक लोकेशन और द मॉडल नंबर ऑफ दैट टेस्ला, राइट? यू जस्ट नीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट टेस्ला। तो एक इंफॉर्मेशन हो गई ऐसी तरह की, ठीक है। लेकिन फिर एक मान लो एक इंफॉर्मेशन है ऐसी, ओ भाई सॉरी ये वो था टाइमर, 18 मिनट हो चुके हैं, रैप अप करते हैं भाई। So, like, I would like to propose the question that we know all the data, they're collecting a lot of data from us, but how is that data being used? Not just how it's being collected or stored, it's just Hey, being used somehow. what I get Yeah. it. Hey, what we wouldn't give to know somebody's information. That is how the world works these days, right? And that is the truth, भाई right? बात तो खैर हाँ ठीक है, and we are just one person. I'm just one person in a 7 billion people world, हाँ right? And Hmm. in that 7 billion people world, there are simultaneous many companies which are over the net worth of $2 trillion, you know, which have your data. And probably, see, there are two perspectives, the pragmatic one and the nihilistic one. They are basically using your data to maybe, you know, tailor your experience to an advantageous level. But as much as I like this idea that it is being used to my advantage to make my user experience better, there is a nihilistic approach here, the cynical approach, I'd say, that my data which I entered today will be used against me someday. हाँ अबे बट ये अबे फिर लेकिन ये बात आ गई ना कि वो तुम्हारे अगेंस्ट यूज करके भी क्या ही कर लेंगे, मतलब हाँ तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट अगर तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारा डेटा यूज होने लगा तो फिर तो उनका ही एक तरह से ये मान लो कि उनका ही कस्टमर बेस It will be a loss for them because now they're revealing that we collect all of this data. So it's just whatever you get tailored experiences on sites.
ads and whatever. So Hmm. basically, ads are tailored to what you search on the internet. For example, and if that is being recorded, who knows what else is being recorded? And when we talk about currency today has both, as I think Sparsh once said, that कुछ नया लाते हैं तो it will first have goes into the dip and then comes back as a new thing, as something people want, maybe हाँ. as this data security, and as what we told or what we talked about today, that as a currency which can be, यार we what we हमने SST में पढ़ा था ना, that the whole trading thing, that हाँ. we give, for example, one company gives data to the other company, and for that data the company gives back some money, right? Because Hmm. हम Google Yeah, AdSense में जाते हैं, AdSense basically pays us to for giving them access to what we have on our website, right? exactly. Basically वो trading वाला हो गया. Viewers. एक तरह से हाँ. So that this is a new form of currency, Hmm. and maybe it is being used in a well, to just यार डॉलर वगैरह आए, उन्होंने मार्केट्स को स्टेबलाइज करा, and it has been Hmm. normal. Paper currency has been a good thing, but this type of currency, it may prove, I'd say, Disastrous. abominable, disastrous वही. one day for the world. Yeah. खैर मतलब हाँ, डेटा एज अ करेंसी जब हम कह रहे हैं, वी डोंट मीन की एक्चुअल करेंसी, बट हाँ वी मीन इट काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ पावर, की डेटा जिसके पास है वही सब, लाइक वही बंदा सबसे ज्यादा हाँ, वो बार्टर, पावरफुल. एक तरह से हाँ. Yeah. पावर है, बार्टर सिस्टम भी हो गया ना. हाँ वही. तो आई थिंक भाई ये एक सही नोट है टू एंड दिस वन, This is a एंड good दिस place to end. एपिसोड. या This was a very nice episode, and yes, this I was a good talked Yes. episode about since we did not deviate a lot. Yes, this it. all right people, thank you for Okay, listening. thank you. Bye. Okay. Thank you for listening. Bye.